Palak, now as you can also see, Elvish Yadav, a YouTuber, Yes. he's in the house and he's targeting Avinash very nicely. So, which he has accepted also. Called Abhishek as Janani, which is a huge statement to pass in national television. Yeah. Falak called him gay. एक मर्द के body में, then Avinash said Janani, and I saw that. I even tweeted on that. This is so disrespectful for you to pass. I was the first person who told Pooja ma'am कि आप कोई और colors नहीं पहनते. Why is it I'm only seeing you wearing black colors? And अच्छा, you asked her? ये में भी बेचारी जो भी पहनी थी, मैंने बोला सुन गर्मी है, यहाँ पे तेरा स्टाइलिंग वाइलिंग कुछ नहीं चला, just wear something very cotton and loose and nice. तो कॉर्डसेट्स भी मैंने उनके से निकाले थे बैग. फर्स्ट डे जाके मैंने मनीषा के बाल टोंग किए थे. That listen, these tongs are going to look very nice on your outfit. Let me do it. She's like, but मुझे नहीं आता. मैंने तू बैठ मैं करके देती हूँ. तेरी ड्रेसिंग सेंस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई. आई थिंक ऐसे लग रहा था कि वो रोज वीकेंड का वारी जी रही है वहां पे. सीक्वेंसेस, ब्लैक्स एंड ऑल, उनके डे लुक्स मुझे डे लुक्स अपैरेंटली नहीं लगे. I opened his bag also, like you asked me who else did I. I was like, आप अपनी बैग खोल के मुझे दिखाओ क्या कपड़े हैं आपके पास. लाए थे वो कपड़े, शर्ट्स लाए थे, डेनिम्स लाए थे, कुछ नहीं पहन रहे थे. He's like, मैं घर पे तो ऐसा ही रहता हूँ, तुम लोग ये एक्स्ट्रा ड्रेस आप वॉश भी नहीं कर रहे हो अपने कपड़े. He's like, नहीं मैं डिओड्रेंट लगा देता हूँ. I said, oh my God. Don't tell me. I said, no dude, you wouldn't. And that's what he told. ऐसा लगता है अच्छा चलो आलू डाल दो, बीन्स में भी आलू डाल दो, भिंडी में भी आलू डाल दो, बिरयानी राइस बन गई उसमें भी आलू डाल दो, सेफ रहेगा. तो वहां पे आपको काफी चीजों को कैलकुलेशंस के साथ, कैलकुलेशंस को दिमाग में रखकर एक दिन मुझे अभिषेक ने बोला था प्लीज आप मेरे लिए ऑमलेट बना दो, बट उसपे आधा प्याज और टमाटर डाल देना. ऐसा अच्छा ठीक है. मैं किचन में पहुंची, वही फलक का नहीं डाल सकता प्याज. मैंने बोला यार बेचारे को आधा प्याज भी नहीं मिल सकता सोचो ऑमलेट में अभी. So Palak, how have you been and what's happening these days after Big Boss? And please थोड़ा सा आप Big Boss की जर्नी को भी एक्सप्लेन करो. और मैं ये भी जानना चाहूंगी if you have anything to repent about something which you think that you could have done differently there. Honestly, Barkha, my journey from right the beginning was very, very challenging, because जितना मैं expect करके जिस energy के साथ stage पे गई थी, that, there's a lot that I want to say on the stage, or I'm going to do this when I meet Salman sir. But कहीं ना कहीं मेरा introduction ही काफी मेरे लिए demeaning हो गया था. And उसके बाद, obviously, I was sent in the house after 2 days. That itself was a very challenging task because already लोगों के allies बन चुके थे. They made their own groups. Everyone started mingling around with each other. And, especially when there are 2 people in the house who are already against you, somebody you don't share a good bond with. So it was very challenging for me to make my own space in that show or in the game or in the house that way. So काफी challenging था मेरे लिए वो पूरा scenario. But then I did try my best. I was being myself. I was the way I am in real life. That's exactly how I was in the house as well. थोड़े banters भी हुए, debates भी हुए, कुछ लोगों के साथ चीजें sort out भी हो गई, like Jiya. So yeah, things were like that. So but there are certain things, अगर मुझे पता होता कि ये मेरी journey इतनी छोटी है तो मैं काफी कुछ और कर पाती show में, and a couple of days, like 1 week or probably 5 days, was not enough to prove myself in the show or to be out there or to show my personality, because I had a graft to my game, something that people could relate to outside. So yeah, one thing that I would really would do if I knew that my journey was so short, that make my game a little more pacey. That's one thing that I could have done. बेसिक से आपका मतलब क्या पलक? I would like to know. Pacey. I mean, pacey means pace has to be there. More pacey. Pacey, I said. Okay. Yeah. Yes. So because it was a short period of time. So yeah. पलक, आपको क्या लगता है, आप क्या फील कर रही थी जब आप बिग बॉस के हाउस में गई? तो एकदम जाते ही कि मुझे किसकी तरफ से, जैसे आपने बोला 2 लोगों का आपको सपोर्ट यू वर नॉट एक्सपेक्टिंग, उसके अलावा एकदम से आपके वाइब्स क्या थे कि किसका सपोर्ट आपको मिलने वाला है बिग बॉस हाउस में और कैसे आपको अपना गेम खेलना है? व्हाट वाज इमीडिएट, एकदम होता है ना कि यू फील इन दैट कंफर्ट जोन कि मुझे इस ग्रुप के साथ रहना है या इसके साथ नहीं रहना, ऐसा कुछ आपने फील किया? Definitely, because जब मैं enter
मैंने घर में एंटर किया एंड देन आई स्टार्ट मीटिंग एवरीबडी. एक बहुत ही नॉन वेलकमिंग वाइब मुझे आई फ्रॉम द ग्रुप वेयर पूजा मैम, साइरिस, फलक, अविनाश, जिया, इन लोग का एक ग्रुप जो था, वहां से मुझे बहुत ही नॉट सो वेलकमिंग वाइब आई. बिकॉज ऑलरेडी मुझे लगा कि उनके दिमाग में एक सीड और प्री जजमेंट मुझे लेकर है, क्योंकि 2 दिन में ऑब्वियसली उनने बातें की होंगी मेरे बारे में. एंड they knew the baggage of my past or whatever, but somewhere I felt that those people were very non-welcoming towards me. Hence, very organically, I got more inclined towards Abhishek. I was chilling with Akanksha, और मेरी साथ में entry हुई, तो both of us had a very strong bond together. So definitely game में आगे मेरा अभिषेक के साथ और आकांक्षा के साथ bond stronger हो रहा था. And Manisha also, I sort of liked her game as well. बट बेबिका के साथ मेरी कभी नहीं बनी. वी वर नॉट ऑन द सेम इंटेलेक्ट लेवल और बी इट इन टर्म्स ऑफ कॉन्वर्सेशंस. उनकी नॉर्थ पोल जाती थी तो मेरी साउथ पोल, सो आई न्यू समवेयर आई कांट बी फ्रेंड्स विद दीज पीपल. एंड जिया के साथ मेरी काफी हद तक चीजें सॉर्ट हो गई थी बिकॉज आई कन्फ्रंटेड हर. सो डेफिनेटली इन लोगों के साथ मेरा बॉन्ड हो रहा था, बट द अदर ग्रुप वर, they were the only ones who nominated me in the first week. Hmm. Okay, Palak, I'll ask you a couple of questions regarding your journey and work, and then we will come back to Big Boss. जी. When I was watching Big Boss, of course, you have been in the TV entertainment industry for quite some time, and I believe that you get a lot of popularity and publicity with Big Boss. Big Boss was That's right. another, milestone for your career. And when you were in Big Boss, I really liked your sense of dressing up and the way So you were, sweet. styling in Big Boss. I always appreciated it. And now I've also heard that you plan to launch your own high street label. Please Yeah. tell me something about your upcoming venture, about the So plan. basically, clothing has always been like a therapy for me. I am a fashion designing student. I've done with my fashion designing. I came to Mumbai with some of my dreams where I thought I want to be a stylist or I want to style these celebrities or for some shows. But then I never realized that, life in vanity is actually better than life outside vanity. And that's when I was like, I started auditioning and I got my first show within just 2 months of coming to Mumbai. So God has been kind, Bombay has been kind, industry has been kind to me. So that way I thought, okay, why not try this as well? But वो जो एक बोलते हैं ना कीड़ा, कि वो तो करना ही है, डिजाइनिंग की है, कपड़ों का इतना शौक है. So this was actually one of my dreams to launch my own fashion label. And I thought now is the best time since I just got out of the house and, people know me well. And, now I'm free also. I have started going out for a couple of meetings as well. But before I start up with my new project, I thought now is the time I can actually give in my 100% to my brand. Because क्या होता है as an actor, अभी वो time नहीं मिलता, to give your, because on set with 12 hours on set, giving everything to your show. So you don't get that time to prioritize any other thing. तो ये brand execution हो ही नहीं पा रहा था 2 साल से. So now I was like, okay, this is it. I need to be a little firm and enter into this industry since it's been part of my life. So I am coming up with my own clothing brand. It's going to be a streetwear brand, which me and my brother Neil Purswani, both of us are planning to do this. Why with him? The reason being is obviously tomorrow, eventually I will start with my show. I will start shooting. If I'm not able to give my 100%, I need someone on the back end to look forward with my brand. Although he runs a chain of restaurants in Bombay, but clothing is something that he is also his forte. So both of us are doing this together. It's going to be a streetwear brand. Something that we're working on is basically, sorry, I was just getting a call. Yeah. So this brand is mainly going to be for, like airport looks or very drop shoulder t-shirts with those joggers and very street style. Something that I personally enjoy wearing, something that defines me as a person. So something that but my whole vision to the brand is to cater the class audience. Basically, the range is going to be more of that sort. And I want to make this collection to be more exclusive.
So So, yes, since being a designer remains your expertise, and you have a yes. professional background also for that. So, talking about Big Boss house, and who you think is most stylishly dressed in Big Boss, and who's most shabbily dressed out there, and did you also indulge yourself in styling somebody in Big Boss house, or giving fashion tips or styling tips, because we could hardly see anything of that sort. Yeah. So exactly, you could hardly see anything of that sort because there was any hardly We time that didn't I see got, that side of, yeah, we didn't see that side of Yes. yours. So would like to know from Yes. horse's mouth. So honestly, I was quite, my fashion game was purely very strong, and they keep on making mockery. Also, I took so many clothes, 100 plus clothes with me, and there obviously I had to make sure that be it my night suits, my lounge wear, my gym wears, or my day looks, I had properly planned everything. And if you would even open my bag and see, I had like packets segregated, like this jewelry, these shoes are going to go with this outfit. So my everything was well planned. In terms of giving styling tips, well, not really. I didn't really give anybody some styling tips like that in this show because यार वो bonds बनी जब styling tips तब देखते हो जब एक comfort level हो जाता है उस इंसान के साथ. Because you never know यार लोग बहुत Takes it इस like चीज को what? offensively ले सकते हैं. Hmm. So unless and until that bond, but जब आकांक्षा जेल में थी तो शी वाज लाइक ब्रो आई ट्रस्ट यू गेट व्हाटएवर यू वांट एज पर यू थिंक सो आई वाज जस्ट गेटिंग इनटू हर बैग आई वाज लाइक ओके दिस इज अ न्यू वार्डरोब दैट आई हैव इन फ्रंट इन मी सो आई वाज ओनली वीकेंड का बार का आउटफिट भी मैंने चूज किया था उनके लिए द फर्स्ट वन द साड़ी दैट शी वोर सो आई वाज द वन हु चोज दैट फॉर हर जेल में भी बेचारी जो भी पहनी थी मैंने बोला सुन गर्मी है यहाँ पे तेरा स्टाइलिंग वाइलिंग कुछ नहीं चला जस्ट वेयर समथिंग वेरी कॉटन एंड लूज एंड नाइस तो कॉट सेट्स भी मैंने ही उनके से निकाले थे बैग से फर्स्ट डे जाके मैंने मनीषा के बाल टोंग किए थे दैट लिसन these tongs are going to look very nice on your outfit. Let me do it. She's like, but मुझे नहीं आता मैंने तू बैठ मैं करके देती हूँ तेरे लिए. So I made that look for her. So that looked very nice. देविका की ड्रेसिंग सेंस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई. आई थिंक ऐसे लग रहा था कि वो रोज वीकेंड का वारी जी रही है वहां पे सीक्वेंसेस ब्लैक्स एंड और उनके डे लुक्स मुझे डे लुक्स अपेरेंटली नहीं लगे थे सो उनको हम कुछ नहीं बोले तो बेटर रहेगा because I don't think she's so stubborn she would even take it nicely. बाकी जिया की ड्रेसिंग सेंस तो मैं उन्हें 6 साल से जानती हूँ उनकी हमेशा से अच्छी रही ही है एंड yeah there was nothing that I could change about that and I personally like Jia's dressing sense so I don't think there was anything to change about that. अच्छा, मैं पूजा भट्ट की बात करूँ तो पर्सनली आई लाइक हर एज एक्ट्रेस. उनकी Right. मूवीज वगैरह काफी मैंने देखी. अभी रिसेंटली भी कुछ देखी बिग बॉस के बाद ही. आई जी. सॉ, आई लाइक्ड हर अ लॉट, हर स्क्रीन प्रेजेंस एंड एवरीथिंग. लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ तो मुझे लगता है उनको भी थोड़ा सा अपना जो स्टाइलिंग थोड़ा सा और ज्यादा थोड़ा मतलब शी नीड्स टू ऐड सम कलर्स into her Right. wardrobe and change her Right. colors in place of wearing the blacks or whites only. So once I Right. could see her wearing an orange t-shirt and yesterday a pink shirt. What's your take on that? So in fact, I was the first person who told Pooja ma'am कि आप कोई और colors नहीं पहनते. Why is it I'm only seeing you wearing black colors and अच्छा, you asked her? yeah. I asked her. I Okay. asked her. I said, "Ma'am, आप और कोई color नहीं पहनते, just black." He's like, हाँ, यही मेरा color है. Just makes me, more, I think, stronger, या powerful. ऐसे कुछ उन्होंने मुझे बोला था. मुझे exactly याद नहीं है, but to which she told me, she's like, हाँ, अभी मैं मतलब I'm more into black सोनी और एक दिन उन्होंने weekend के बार पे white पहना था. I was like, वाह यार, आज तो मतलब चलो black से white तो ट्रांस बोला. Still, I have some black in me. And she had worn black pants with it. So she told me this is the only color that I feel is for me. Night suit में she would एक मैंने episode देखा था where she had worn a pink color का, but उनका वो black set night suit ही रहता था पूरा time. I think maybe हो सकता है उनके लिए ऐसा कुछ psychological होगा उनका कि Hmm. black is my color, it is my lucky color, or black. A lot of people have this psyche. Like my brother wears a lot of black. He thinks plus black makes you look more powerful as a color. Secondly, I'm not to, particularly for her or anybody for that matter in the fashion industry, black always makes you look more leaner. Hmm. Even if when I wear black, it makes me look more leaner on the side. If I go with more pastel colors or lighter shades, it'll always make your body type look more broader. Like Yeah. vertical lines, it makes you look more leaner and taller. Horizontal would always make you look more, Hmm. on the heavier side. So Hmm. that's there. But probably I think unka lucky color hoga black, which
is why she's sustaining so much in the show as Yeah, well. because she's been wearing whites also. With white, it's opposite. White's It also a makes little. you look Black is always there, expanded. but in Black her is a safe black, color, no it's doubt. a It's a safe safe. color. It's a Yes. safe color. So some wardrobe must-haves, according to you, for young people, for youth, when it comes to high street fashion. If you would also like to Right. share this with us So I think the for must upcoming have, season. Yeah. yes, a must have in their wardrobe on a general context, whatever the weather or season may be, because we are in fast fashion. Fashion keeps on changing every now and then. That stress to match up with that and to buy new clothes every now and then is quite a task. So I feel the must have that everyone needs to have is obviously a little black dress, which goes with everything and anything. You team it up with like a nice truck with heels or sneakers for that matter. A little black dress is a must. A denim jacket, I feel one should always have. It always adds that element to any outfit. Hmm. Whether it's a white bralette or a denims that you're wearing, you put on a denim jacket, it adds like a element to it. On a nice little black dress, also you put on a denim jacket. That also looks nice. It can go with anything and everything. You put on like a white t-shirt or blue shorts also. You're stepping out an airport look, you can carry it. As a casual look, you can carry it. You can go for a bar night wearing like a nice, because I have three denim jackets in my wardrobe, which is different, yet very similar, but it is a must-have for me. So that is another must-have in your wardrobe. I feel you need to have like a nice pair of denims, which needs to have a good fit. I think can be like I personally feel when it comes to denims, I need to have a good brand. I cannot have something which is something that I pick it up from a Lokhandwala market or something. Otherwise, I don't care. Like even if I like something, I won't say, oh, is it a Zara? Is it a Bershka? Is it American Eagle? I mean, the fit has to be nice and the person wearing it. What I'm wearing right now is a local Instagram brand that I'm promoting. I do promote small brands as well, Okay. the startups, and I do believe in that totally. Like So everything in my wardrobe, we can give a nice brand courtesy also, whichever brand you are promoting. In definitely. our video also, we can give courtesy to the brand. Yes. So it's a brand Kawa. Hmm. It's by my stylist Sabrina has sent me a lot of stuff. So I do promote all these local brands on Instagram because they do need that platform to be out there, to be promoted, especially when people, be it actors or influencers, we wear their stuff. That's just gonna help the brand to go ahead. Because that I think that's very important because Zara, H&M, and all these brands are already well established in the market. So I feel, and why not? I mean, the fabric is nice, the fit feels nice, it's very comfortable, it's a nice loungewear. So why not? So yeah, definitely. And I feel a joggers is a must have in your wardrobe when I'm traveling, be it airport or taking road trips, because that's something that I usually do. So like having a nice pair of joggers in your wardrobe, you can style it with anything that you like, with like a nice sneakers or whatever. So that's also very important. Feel is that with Zara, Bershka, or H&M, or these kind of Marks and Spencer, these kind of Yes, brands, they look very common also, and sometimes very repetitive also. right, We can get to see many celebs or people wearing the similar kind of cut or fashion or the design right. or the pattern. But it's as you said that you give, you try out dresses from designers also, and Yes, from individual yes, labels also. So it's good to be yes, experimentative, and it's good to be versatile about how you dress up. And so now, absolutely. coming back to your projects, Palak, I would like to know what's in store, what's in pipeline. Any plans to go for any other reality show or a show like Khatron Ke Khiladi? Right. So definitely Khatro is in my pipeline. I would really, really want to try for that show because that is something that show really checks your patience and your capability or the kind of strength that you hold because that's definitely there. And, somewhere Big Boss did backfire me in a way that I already had certain people in the show, which out of which this journey became challenging for me. So definitely this journey was incomplete, but I would definitely want to go for a reality show because I feel the kind of personality that I hold, I would love to be part of some reality shows as well. But web is something that is again in the pipeline. I've done television for good 8 years and Ruhaniyat was my last web also that I did. So now the graph and my focus and manifestation is more on the web and reality for sure. Khatro might happen next year now because this year I think it's already done. But
Endemol has been my second home. The production, they've really always treated me well. So definitely I'm looking forward to work with them for future projects as well. Khatro is definitely on the list for sure. Okay. So what do you enjoy the most? The television, web series, web shows, or now the reality show? Reality is amazing, man. I feel it just brings out the best and the worst out of you, and it is so unpredictable. I feel I totally enjoy doing reality shows. This is the time, my followers have always seen me playing different characters in different shows. I've mostly done negative leads, or played an NRI or a boss woman in Rohania for that matter. My fans and followers, they never get to see the real side of me, what Palak Purswani actually is. And I'm totally different from what I've played so far, the negative leads or whatever. But I'm actually the girl who's always been, have that fun element in life, always been chirpy. I'm somebody who does meditation. I am spiritually very strong. I read books, and I do believe in manifestation and that sense of positivity. So, I genuinely wanted my fans and followers to see that side of me. Hence, I chose to be part of this reality show, and which was very successful in that matter, because the kind of comments, the DMs, my Twitter was flooded that you were so positive, you were so real in this show. So I think that was mission accomplished for me. So definitely reality show is something that I enjoy doing. And yes, me as an actor, because this is something which I really want to pursue. So definitely web shows is something that is there in my pipeline. Not that I look down upon television. Today, what I am is because of the TV work that I've done, Television has made me, and the people that they know me today is because of television. So definitely, if I get like something very good, something very extraordinary, but as an actor, I would want to experiment. So web show is something that I would definitely want to take a step up to. So, as you said, that your social media, your Twitter and your social media handles are Yeah. flooded with, requests to go back to Bring Big Palak Boss. back. Yeah. Yes. And we can also see, voices being raised that please bring Palak back. And she Yeah. was the soul of Yeah. the show and many other things. She was Yeah. so open and Yeah. straightforward. So, if I Right. may ask you, Palak, why is it taking so long to go back to Big Boss? And when can are we seeing you as a wild card at all in Big Boss? Honestly, I myself don't know why is it taking so long. जब बुलावा आएगा तब जाएंगे हम बिल्कुल. Like I said, my journey was very incomplete. It was unfinished. I would love to go back and finish my journey, because there are certain things that I couldn't even show to my audience. There was a lot that I could give to the show. There are certain things that I want to clarify on that platform, because कुछ चीजें बोली गई थी मेरे against. एंड मुझे उन लोगों को डेफिनेटली जवाब भी देना है. तो जब बुलावा आएगा तब शायद चले जाएंगे, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं. छोटी सी स्वीट जर्नी थी. बहुत ही ग्रेटफुल हूँ डेफिनेटली दैट एटलीस्ट ये मंच मिला, ये चांस तो मिला थोड़े ही टाइम के लिए, बट मिला. टू डू लिस्ट टिक हो गई जो मैनिफेस्ट करती थी. बट अगर जब आएगा वाइल्ड कार्ड का चांस तो डेफिनेटली जाना चाहूंगी. तो कुछ सोच समझ के ही शायद इतना टाइम लग रहा होगा, टाइम ले रहे होंगे, बिकॉज इवन इफ दे सेंड यू एज अ वाइल्ड कार्ड, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ मेकर्स पर्सपेक्टिव, आई नीड टू अगेन फिट इन द शो, बिकॉज काफी गेम आगे बढ़ चुकी है, सो जहां उनको शायद लगेगा कि नाउ इज द टाइम व्हेन पलक कैन एक्चुअली गिव इन समथिंग टू द शो और पुट इन समथिंग टू द शो, सो दे माइट इवन कॉल मी. लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट. हो सकता है हमें मौका मिले आपको मेन बिग बॉस में देखने का, इफ नॉट इन बिल्कुल हो सकता है, we are व्हाई keeping नॉट. our fingers crossed for that also. And Palak, now as we can also see, Elvish Yadav, a YouTuber, Yes. he's in the house and he's Yeah. targeting Avinash very nicely. So, which he has accepted also कि मैंने अविनाश को तो छोड़ना नहीं. I don't know with what reason. So, how do you like his roasting Avinash? You think how is he scoring on that count? According to So I you. think I saw one of the clips. I was really occupied since 3 days. I had some or the other things. So मैंने show 2 दिन से follow नहीं किया है. But definitely I am keeping a check on the show Twitter पे, and what's happening, what's buzzing around. तो मैंने एक देखा when Avinash is like, भाई तू तो अभी आया है. To which Elvish said कि तूने कौन सा 23 दिन में कुछ उखाड़ लिया. तो Hmm. मतलब I saw that and I was like, okay, this is good. Like Hmm. definitely मुझे ऐसा लगता है कि अविनाश कहीं ना कहीं बहुत ही कंफ्यूज है शो में लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो सारे सीजन्स गोट के पीकर आए हैं. तो वो ना हर सीजन का एक एक चीज, कि इस सीजन में ना
इसने कंगा तोड़ा था, इसने टॉवेल फाड़ा था, तो मैं ये करूंगा। इस सीजन में इसने जो भी मतलब ये किया था। सो यू नो आई फील समवेयर ही सो कंफ्यूज, क्योंकि इतना ज्यादा भी शो देखना कहीं ना कहीं यहाँ पे बैकफायर हो सकता है। कि इस सीजन में एक लव एंगल चला था, तो चलो मैं लव एंगल दिखा देता हूँ कि ओ फलक आई रियली लाइक यू एंड ऑल ऑफ दैट। तो आई पर्सनली फील दैट ये मुझे पहले से पता था दैट ही वाज नेवर मेड फॉर दिस शो। हम्म, हम्म, तब जब मैं उनसे बात भी करती थी 3 साल पहले दैट बिग बॉस इज समथिंग, एंड ही वुड ऑलवेज डिस द शो। He'd be like, yeah, I don't think this show is something. I mean, I would never want to show my fans my real personality. ये चीजें उन्हें मुझे बोली थी। So okay. I personally feel how he is as a person in real life. अगर वो वैसे ही जाते ना शो में, तो उनके लिए ही बहुत बेनिफिट होता। पीपल वुड हैव रियली लाइक्ड हिम। तो आज वो जो शो में एक एंग्री यंग मैन का इमेज पोर्ट्रे कर रहे हैं, द वे ही इज टॉकिंग टू द गर्ल्स, ही इज डिसरिस्पेक्टिंग गर्ल्स इन द शो, somewhere it's backfiring him only. Nash had a discussion and they called Abhishek as Janani, which is a huge statement to pass in national television. Yeah. Falak called him gay. एक मर्द के बॉडी में, then Avinash said Janani, and I saw that. I even tweeted on that. This is so disrespectful for you to pass. भाई Exactly. तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो like you're just being a gossip queen and gossip monger in the show. बैठे हुए हो and all you're doing is just sitting at one sofa seat and just looking around and just judging people. And तुम भी तो यही कर रहे हो भाई. You have all the traits of, but then you're still calling somebody else as Janani, which was a very harsh statement to pass. And definitely you're right. He's not getting much to the platter. He's not getting the newness to the show. Because sadly उनकी गेम तो मैं ही थी ना, और मैं पहले हफ्ते में निकल गई। सो ही वुड हैव गॉट दैट शॉक दैट ओ माय गॉड, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब तो कुछ बचा नहीं है। चलो लव एंगल खेल लेते हैं, चलो Mm, टॉवेल फाड़ देते हैं, चलो वो एंग्री यंग मैन इमेज दिखा देते हैं थोड़ी। mm. His game is honestly, it's Confused. very weak. Very It's confusing confused. was. It's very weak. I really thought कि अभिषेक और अविनाश जब वन ऑन वन आएंगे तो कुछ मजा आएगा। Mm, अभिषेक उसको खा जाएगा शो में, खा चुका है ऑलरेडी। mm. But तो his game is very weak. yeah, you have also been supporting Abhishek fukra.insaan. He's a famous Definitely. YouTuber, as we all know. So now with Elvish, another YouTuber being there in the show, how you think it's is going to change equation for Abhishek and the entire overall scenario for fukra.insaan? Hmm. What is going to change now with another YouTuber being there in the show? And while Abhishek is also there as a YouTuber. What's your So I opinion? personally, I personally feel that this show, nothing has to do with you being a YouTuber, you being an influencer or an actor for that matter, TikToker. I think एक मंच पे हम सब हैं तो सब equal ही हैं, किसके क्या followers हैं किसके नहीं, that doesn't really, of course it matters because जनता है असली boss, but I feel Abhishek is a strong personality than just being a YouTuber, which is great. He's doing very well for himself, the way he's where he's coming from and everything. But keeping the professions aside for now, I feel as a personality, how he is as a human, he's very true to himself. He's very real. He is somebody who takes a stand for right or wrong. इनफैक्ट वो 5 दिन में उन्होंने मेरे लिए कितनी बार स्टैंड ले लिया, चाहे वो कॉफी का पचड़ा हो, पूजा मैम के साथ वो टिफ हो, तो शी ही वेंट एंड कन्फ्रंटेड मनीषा दैट तुझे ऐसा लगता है पलक ने तुझे डिमीन किया, या कभी तुझे ऐसा लगा कि वो सुपीरियर है? शी सेड नो, टू विच अभिषेक वाज लाइक तो ये पचड़ा है ही किस चीज का, व्हाई इज पूजा पाउंसिंग ऑन पलक? सो ही नोज वेयर टू टेक द राइट स्टैंड। है दोनों सेम कम्युनिटी के, दोनों की आर्मी बहुत स्ट्रांग है बाहर। बट अब क्वेश्चन ये है कि कौन स्टैंड आउट करता है एज अ पर्सन मोर, एज अ पर्सनैलिटी। एंड बिग बॉस की हिस्ट्री में, ये मेरा मानना है, माइट बी रॉन्ग, बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी कोई वाइल्ड कार्ड जीता नहीं है अब तक। Hmm. यू नो जो लंबी रेस का घोड़ा है वो एक्चुअली तो अभिषेक है इस शो में फ्रॉम द स्टार्ट। तो फेयर भी ये होगा कि ट्रॉफी वो ले जाए, बट डेफिनेटली मैं देखना चाहिए, मेरा मानना है, बिकॉज आई बीन सपोर्टिंग अभिषेक, आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, बट मजा तो अभी आएगा जब दोनों विल बी फेस ऑफ, जब दोनों का होगा तो देखते हैं फिर क्या। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस।
Okay, so during a conversation between Fukra.insaan and Manisha, this was also pointed out that the friendship between the bond between Jade and Jiya is not looking like a father-daughter bond. And as Right. much I know, during an interview, I saw your interview video also, that you also felt similarly. I mean, in the same way. Whereas Jiya Yes. recently, there was a ruckus in the house, and Jiya recently opened her, spoke her heart out, and there was a ruckus. You must be aware about that. So do you still feel the same way, or your opinion has changed? सो पहले तो वो जो कमेंट दिया गया था वो बहुत गलत था। Hmm. जो लिखा गया था जिस वे में, बिकॉज मैंने बहुत अच्छे से देखा, अभिषेक ने एंड में भैंस की आंख कहा था, Yes, बट वहां पे जो स्टार स्टार करके डी, इट साउंडेड समथिंग एल्स, द something गाली। else. Yeah. ओके। सो वो तो पहले तो बहुत ही गलत था, एंड मुझे गुस्सा आ रहा था कि अभिषेक ये चीज को क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रहा है। Hmm. मे बी फॉरगॉट और व्हाट ही वाज अ लिटिल, कि उसको ध्यान में नहीं था कि क्या, बट उसने वो गाली नहीं बोली थी, ही सेड अरे भैंस की आंख। एंड व्हेन आई सॉ द एपिसोड, उसका जो टोन था बोलने का वो एकदम ऐसे गलत वे में नहीं था, दैट ओ माय गॉड लाइक। बट अगेन, आई पर्सनली फील कि जो हम मेरे को एज अ व्यूअर, एज अ थर्ड पर्सन दिख रहा था, ये मेरा भी मानना था कहीं ना कहीं कि आप उसको डॉटर 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 तो बोल रहे हो, बट you're biting her here, you're biting her on the hand. I'm saying from a Jade's perspective. Hmm. Jia is not wrong here or whatever, but I feel Jay, because I've been in that house also, he was coming across as a Casanova. As a viewer, I'm saying, not as a contestant. When I saw the episodes. So Abhishek's POV point of view here was this, that दीदी बेटा बोल रहा है, but somewhere his actions are not proving it as a daughter, Hmm. which somewhere I saw that in the episodes. Hmm. But probably जिस तरीके से दिखाया गया and all that, Jia didn't react much later to it. अगर वहां पे अविनाश होते उस चीज में, तो आई थिंक वो उस चीज का बवाल ज्यादा करती, Hmm. बट उनने लेट गो की उस चीज को, साइरस और अभिषेक की बात को। Palak kitchen is the epicenter of action in Big Boss house, as we can see. And people, my viewers and readers would love to know a little kitchen secrets from you. Like, right now, who's cooking the tastiest food, as you have also tried the food Right, cooked by them. right, And what is like the staple meal in Big Boss house? What's cooked for lunch, dinner, or somewhere in between? right. And what you like the most, I mean, in food in Big Boss, during Big Boss, your stay. सो आई पर्सनली, यार मैं तो, दिस विल बी वेरी बायस्ड ऑफ मी टू से, बट जिस दिन जिया और मैंने खाना बनाया उस दिन सबसे टेस्टी बना था, बिकॉज ये लोग जेल में बैठे थे अंदर, Okay. एंड आई हेल्प्ड हर आउट विद थिंग्स एंड एवरीथिंग। ओ माय गॉड, वो एक हफ्ते में सबसे यमियस्ट खाना उसी दिन मैंने खाया, ऐसे लग रहा था घर का खाना मिला है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, मुझे जेन्युइनली आलिया के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था। मोर देन द टेस्ट, जिस वाइब्रेशंस जो वो उस खाने में डालती थी, जिस वाइब्स के साथ वो खाना बनाती थी, दैट यूज टू बी अमेजिंग। देविका आधा टाइम तो लड़ाई करके लगी रहती है, वो Hmm. अपनी पूरी एनर्जीज उस खाने में डालती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है यार क्या नेगेटिविटी खा रहे हो लिटरली। Hmm. बट व्हेन इट कम्स टू स्टेपल गो टू फूड, दाल तो हमेशा बनती ही थी, बिकॉज दाल इज समथिंग विच इज सोल फूड, इट कैन नेवर गो रॉन्ग। Hmm. सब्जियां जो आती थी राशन में, एक दिन हम लोगों ने बीन्स बनाए थे, मैंने और जिया ने, वो भी काफी अच्छे बने थे। फलक ने एक दिन बिरयानी बनाई थी, मटन बिरयानी बनी थी, दैट वाज आल्सो वेरी गुड, बिकॉज वहां पे ना आप कृपी नहीं हो सकते हो स्वाद को लेकर। Hmm. आपको क्वांटिटी मिल जाए, थोड़ी सी एक कटोरी दाल भी मिल जाए, दैट इज लाइक खाना मिल गया। तो वो डेफिनेटली एक चीज थी। फलक की बिरयानी वाज वेरी गुड, बट हमेशा बेसिक खाना ही बनता था। आप ज्यादा लग्जरी ट्रीटमेंट वहां एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बेसिक ही आती थी सब्जियां, भिंडी, आलू, हर चीज में ऐसा लगता है अच्छा चलो आलू डाल दो, आलू डाल दो, बीन्स में भी आलू डाल दो, भिंडी में भी आलू डाल दो, बिरयानी राइस बन गई उसमें भी आलू डाल दो, सेफ रहेगा। तो वहां पे आपको काफी चीजों को कैलकुलेशंस के साथ, कैलकुलेशंस को दिमाग में रखकर, एक दिन मुझे अभिषेक ने बोला था प्लीज आप मेरे लिए ऑमलेट बना दो, बट उस पे आधा प्याज और टमाटर डाल देना। ऐसा अच्छा ठीक है, मैं किचन में पहुंची, वही फलक का नहीं नहीं डाल सकता प्याज, मैंने बोला यार बेचारे को आधा प्याज भी नहीं मिल सकता, सोचो ऑमलेट में अभी। अच्छा, ऐसा ये क्यों? पूरी इतना होती क्या? थी। सच में बहुत ही कम राशन आता है, बहुत ही कम खाना आता है, या जस्ट टू शो ये सब दिखाया जाता है? सच में कम नहीं आता है? नहीं, जेन्युइनली कम आता है बरका, नहीं तो हम लोग, अगर राशन पड़ा हो तो क्यों, हमने कभी खाने में कभी कमी नहीं की है, किसी ने नहीं देखी होगी हम श्योर घर पे। तो हम्म. अगर राशन है तो क्यों हम सोच सोच के बनाएंगे।
हम्म। मतलब आटा खत्म हो गया था। जब एक टास्क था, जब मुझे एक टास्क मिला था कि 30,000 राशन के लिए देने हैं हम्म। या आकांक्षा को जेल से निकालना है, हम्म। वो मेरे लिए मतलब सबसे चैलेंजिंग था टास्क कि ओ माय गॉड अब मैं क्या करूं। मैं उसे निकालना भी चाहती थी जेल से। उसको हीट बॉयल्स हो रहे थे पेट में, वो हम्म। बंदी को टेम्परेचर हो रहा था, वो डोलो खा के सो रही थी। हम्म। यहाँ पे फलक बोल रही थी मेरा पेट दर्द कर रहा है, और उसी दिन फलक हैड फॉलन सिक ऑल्सो। शी हम्म। फेंटेड, उनका बीपी डाउन हो गया था। ओ गॉड। तो एंड मुझे बहुत टॉन्ट्स भी पड़ रहे थे पूजा मैम की तरफ से कि वी हम्म। गेव यू 30,000, दैट्स व्हाई यू सर्वाइव, बट तुम इतनी अनग्रेटफुल हो। तो मैं ऐसी सिचुएशन में थी कि नाउ इज द टाइम आई कैन पे बैक टू द घर वालों को मुझे पे बैक करने का ही टाइम है, क्योंकि मुझे ये स्ट्रेस नहीं चाहिए सुनने का कि हमारी वजह से तुमने सर्वाइव किया। तो अगर मैं अपनी गेम के लिए सोचूं, तभी मैंने वो डिसीजन लिया। एंड जेन्युइनली राशन कम था। राशन होता तो मैं शायद उस चीज को लेट गो कर देती और आकांक्षा को जेल से निकालती, बट राशन नहीं था। तो जेन्युइनली ये जो है, ये ऐसे ही बज नहीं है, राशन कम होता है। Hmm. Hmm. I know. So, Palak, I'll ask you a question and please give me your feedback with reason that why you think जी, that way. So, I want to know about the equation between Pooja Bhatt and Bebika. ये एक मेल है या फिर खेल है? What is your viewpoint on this? अगर मैं सच कहूं तो मुझे ये सिर्फ खेल लग रहा है। ये ऐसा कोई क्यों? मेल नहीं है। मुझे नहीं लगता दैट दे विल कम आउट ऑफ द हाउस एंड दे विल गेट अलोंग एंड दे विल चिल। Hmm. और ये मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता दैट पूजा मैम एंड देविका गोना, जैसा कि पूजा मैम के शब्द थे कि ये लाइफ लॉन्ग ये रिश्ता मेरा रहेगा, एंड आई लिटरली जी। लाफ्ड आउट ऑन द स्क्रीन वाचिंग दैट। हम्म। मुझे ऐसा नहीं लगता। आई थिंक पूजा मैम उनके कंधे पे बंदूक चला रही हैं रखकर, देविका ओके। के। ओके। उनको आगे करना हर चीज में, क्योंकि उनको पता है कि इसकी दुखती नस क्या है, उसकी उसकी वीकनेस क्या है। वो तो भड़क ही जाती है। तो क्या होता है, बेबिका इज एज अ शील्ड फॉर पूजा मैम इन द गेम। ओके। शी इज समवेयर प्रोटेक्टिंग हर इन द गेम। अगर आपने एक चीज देखी होगी, अभिषेक और पूजा मैम का भी एक बैंटर हुआ था। हम्म। पूजा मैम वॉज टॉकिंग और बेबिका आ गई उनको प्रोटेक्ट करने एज अ साइड किक, कि नहीं तुझे इज्जत नहीं है क्या लोगों की। बट यहीं पे पूजा मैम ने परवरिश पे बात उठाई थी अभिषेक के। हम्म। तो वो चीज तो किसी ने स्टैंड नहीं लिया। जो हम्म। कि मेरा बहुत खून खौल रहा था बाहर ये सुन के। आई वाज लाइक, व्हाई इज नोबडी स्पीकिंग अप ऑन दिस? व्हाई हम्म। कैन हाउ कैन यू गो ऑन समबडीज परवरिश एंड टॉकिंग अबाउट हिज पेरेंट्स? हम्म। वहीं से ही साइड की एक बेबिका आती है बीच में एंड बी लाइक, तेरे को बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है, वो वहां से फलक शुरू हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो पीबी 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 ये लोग कर रहे हैं ना, हम्म। ये पूजा मैम के शैडो में रखकर ही गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम्म। हम्म। स्पेशली फलक फॉर दैट मैटर। हम्म। उसकी खुद की कोई गेम है नहीं। ये और जिया और जेठ उनके बीच में आपको क्या लगता है, मेल है या खेल है? खेल है वो भी। वो भी। वो भी खेल है। मैं जिया को जानती हूँ, काफी सालों से जानती हूँ। हम्म। डेफिनेटली जिया इज मोर जेन्युइन हियर, आई फील पर्सनली। हम्म। जेड के लिए ये सिर्फ एक गेम है। आई टेल यू व्हाई ऑल्सो। स्टार्टिंग से उनकी प्रायोरिटीज बदलती गई हैं गेम में। हम्म। हम्म। पहले आकांक्षा थी, बट जब सलमान सर ने बोला आपका एंगल मनीषा के साथ अच्छा लग रहा है, तो सडनली उनने कट ऑफ कर दिया आकांक्षा को। हम्म। फिर उनने बोला ओके नेक्स्ट कौन है टारगेट, हम्म। जिया को पकड़ा। ऐसा नहीं है उनने मुझ पे भी ट्राई नहीं किया, इनडायरेक्टली बी लाइक ओ योर फ्रेंचेस्का, इट सीम्स यू आर नॉट एन इंडियन, यू आर सो लाइक वाइट, यू आर सो प्रिटी, दिस एंड दैट। बट समवेयर ही न्यू माई एक्स इज ऑलवेज पार्ट ऑल्सो पार्ट ऑफ द शो, वो एंगल तो हो ही नहीं सकता। हम्म। बहुत हम्म। दिमागी है वो, येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हैं। तो हम्म। मुझे लगता है जेड के तरफ से आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग जेन्युइन, जस्ट What फॉर द about खेल। what about Abhishek and Manisha? That's genuine. Okay. That's very genuine, at least from my POV, what I see. स्टार्टिंग हम्म। से उनकी वो बॉन्ड रही है, एक दूसरे के लिए वो एज अ स्ट्रेंथ खड़े हैं। हम्म। सो मुझे डेफिनेटली है, बोथ ऑफ देम आर देयर फॉर ईच अदर। हम्म। हम्म। अच्छा, हालांकि ऑल्दो साइरस जी हैज लेफ्ट द गेम नाउ, बट व्हाट डू यू थिंक अबाउट द बॉन्ड दैट पूजा भट्ट एंड साइरस शेयर्ड? It was more like a bond of a principal and somebody, a vice principal, sitting in the house having those two couches by their side. हम्म। And, or that was more of the bond that they shared. But definitely, मेरा ऐसे माना था that Cyrus sir is nothing about without Pooja ma'am. हम्म। Because, he would lead her in every
पॉसिबल वे कि व्हाट पूजा मैम इज डूइंग। एक हम लोग का नॉमिनेशन का भी टास्क था जब पूजा मैम इज लाइक या सेम where she nominated me and next was Cyrus and he also took my name. So somewhere मुझे ऐसा लगता है कि साइरस सर की गेम इज ऑल अबाउट व्हाट पूजा मैम डज। वो आए अपना वेकेशन मनाने, दो टी शर्ट लेकर, ग्रीन और रेड, वीकेंड Yeah, पे we येलो saw पहन that. लेते That was very funny. हैं, वो बस You वेकेशन didn't मनाने you आए। didn't speak to him about that, that you should be changing your I clothes, did. wearing I something. opened his bag also. Like you asked me who else did I? I was like, आप अपनी बैग खोल के मुझे दिखाओ क्या कपड़े हैं आपके पास। हाँ. लाए थे वो कपड़े, शर्ट्स लाए थे, डेनिम्स लाए थे, कुछ नहीं पहन रहे थे। इस मैं घर पे तो ऐसा ही रहता हूँ, तुम लोग ये एक्स्ट्रा ड्रेस जो। मैंने बोला बट यार मैं तो मतलब दिस इज ऑब्वियसली योर शो, आपकी हम्म. जनता आपको देख रही है इतना। एंड पर्सनली आई लव ड्रेसिंग अप फॉर माई सेल्फ, नॉट इवन फॉर हम्म. अदर्स। इट्स हम्म. थेरेप्यूटिक फॉर मी। चप्पल भी नहीं पहनते, मैं अपने घर पे चप्पल नहीं पहनता हूँ तो मैं क्यों पहनूं। हाँ उसे आप वॉश भी नहीं कर रहे हो अपने कपड़े। He's like, नहीं मैं डिओड्रेंट लगा देता हूँ। I said, oh my Don't tell god. I said, me. no dude, you wouldn't, you wouldn't. And that's what he told me. I said, Cyrus, one arm distance, आप मेरे बाजू में भी नहीं बैठ रहे हो please. Then I mean, Pooja Bhatt, I can expect not to be like that. So how did both of them gel so well? How Pooja Bhatt was I don't sitting so understand. close to him and chatting all the time when he मतलब was he would wearing never the clothes stink, I have to say. He would never stink. अब स्लाइली रात को जाके धोकर सूखने में डाल देते थे तो वो मुझे नहीं पता। बट हाँ. जितना मैंने उनको पूछा, बोला नहीं मैं तो डिओड्रेंट लगा देता हूँ। I said, Cyrus, ये तो ज्यादा ही हो गया। I mean, how could you? But again, Pooja ma'am being there for her people. But anybody else would do that, तो उनका वो righteousness निकल जाता, हम्म. अनहाइजीनिक वर्ड यूज किया जाता। हम्म. अविनाश और फलक को बट यहाँ लेकर आप नहीं। क्या बोलेगी, मेल या खेल? डेफिनेटली खेल, 100% खेल है ये। बिकॉज पहले तो आप पहले हफ्ते में जिया से ये कह रहे हो कि मुझे ना ये बचने में नहीं पड़ना, अब रिलेशनशिप हो गया मेरा, एंड माई पेरेंट्स आल्सो बाय माय साइड, दे वर लाइक जी ले अपनी जिंदगी, अभी तो मुझे सिंगल ही रहना है ये वो। तो तीसरे हफ्ते में आपको प्यार हो गया, आप तो अपने ही स्टेटमेंट्स खुद अपोज कर रहे हो। तो अगर आप तो मतलब आप देख कर आए हो शो इतना कि पता आप नॉमिनेटेड हो, अब लव एंगल ही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं रहा। सलमान सर तो हर वीकेंड के वार पे वाट लगाए जा रहे हैं, गेम का डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा, तो चलो लव एंगल ही कर ले। लव एंगल तो चल ही जाता है ना। हम्म. उसको फलक नाज से रिजेक्शन मिला है, मतलब हम्म. दैट इज लाइक ओ माय गॉड, लाइक ऑन योर फेस डूड, व्हाट आर यू डूइंग। एंड जेन्युइनली अगर वो ये एंगल नहीं करते ना, तो एक दो हफ्ते में मैं शायद बिलीव करती कि उनकी दोस्ती जेन्युइन दिख रही है। हम्म. बट यहाँ पे जेन्युइनली वो दो जो आप चाय पी रहे हो, जो भी आपने तो लव एंगल ही दिखा दिया ब्रो। दोस्तियां प्लेटोनिक भी होती है ना, अच्छा, बीच में चीजें कहीं ऐसा भी लग रहा था कि जिया और अविनाश का जो बॉन्ड है वो थोड़ा उस तरफ जा रहा है, उनका इक्वेशन थोड़ा उस तरफ जा रहा है। फिर ये देखने को मिला कि जिया ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया कि अविनाश और फलक एक साथ अच्छे लग रहे हैं, मिस्टर एंड मिसेस सचदेवा, और समथिंग ऑल्सो वी हर्ड. सो इट्स क्वाइट वियर्ड एंड फनी ऑल्सो एट द सेम टाइम, इजंट इट? इट इज वेरी, बिकॉज मुझे लगता है जिया बिन पैंदे का लोटा है इस गेम में। वो ना यहाँ की ना वहाँ की, वो कंफ्यूज है, उसको इन्फ्लुएंस करना इतना इजी है गेम में। कोई उसको थोड़ा ऐसे करेगा वो उस साइड चली जाएगी। हम्म. मतलब आई स्पोक टू हर, आई तो जेन्युइनली कन्फ्रंटेड हर। शी लेफ्ट एवरीबody एंड शी वाज ऑब्वियसली विथ मी एंड ऑल दैट। हम्म. फिर मैं हम्म. नॉमिनेट हो गई, मैं निकल गई, फिर वो उस साइड चली गई, तो मैंने बोला जिया स्टैंड कहाँ है, कर हम्म. क्या रही है, इतनी कंफ्यूज। हम्म. तो मुझे कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अबाउट जिया's फीलिंग्स अबाउट अविनाश, आई थिंक वो उसके लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। हम्म. वो मेरे लाइफ में 6 साल से है बंदी, उससे सब पता है, मेरा पर्सनल लाइफ, माय प्रोफेशनल लाइफ। जब मैं वो ब्रेकअप के दौर से गुजर भी रही थी, वो मेरे साथ गोवा में थी, उन्हें सब पता है what I have been through, what mental trauma I have been through, what anxiety I faced after my breakup। तो ये इसकी सबसे बड़ी बेवकूफी होगी अगर वो लव एंगल या कुछ, एंड दिस इज अ ब्रो कोड, यू कांट ब्रेक। हम्म. इफ यू ट्रीटेड मी लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है आज हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, पर चीजें कहीं ना कहीं तक सुलझ गई हैं, और अगर तुम ये एंगल कर रहे हो तो तुम एक ब्रो कोड तोड़ रहे हो, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर है, और तुम ही गलत दिखोगे बाहर, यू नो। सो एज गेम के लिए भी उसे नहीं करना चाहिए ये चीज, दैट शोज यू हाउ यू आर एज अ पर्सन, यू नो। प्लस मैं बहुत अपसेट थी उससे, क्योंकि मैंने काफी इनिशियल एपिसोड्स जब देखे,
तो जब उन्होंने अविनाश को ये क्वेश्चन भी किया कि पलक ने मुझे बोला था दैट यू वर आउट ऑफ लव, एंड एक हफ्ते बाद उन्होंने बोला था कि तुमने चीट किया, तो ये क्या है एंगल, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे तुम्हें पता है तुम क्यों गेम के लिए, you're stooping to that level. I was very upset with her. As a woman, as a girl, you know what I've been through. You know everything, because she was in my core group. My girls, my friends, they know everything, like minutest details. फिर भी तुम गलत का साथ दे रहे हो गेम के लिए। कहीं ना कहीं आगे जाके तो सच आगे आना ही था। आई वांटेड टू आस्क her, तू कैसे साथ दे रही है ब्रो उसका। एंड अविनाश वाज द गाय जो मुझे हमेशा जिया के अगेंस्ट बोलता था इन रियल लाइफ कि ये लड़की तेरे लिए सही नहीं है। एज अ फ्रेंड, ये हमेशा अपनी लाइफ को तेरी लाइफ से कंपेयर कर रही है। उसके खुद के शब्द थे अविनाश के। हमेशा बोलती थी ये जिया जीने क्यों नहीं देती है तुझे। ये उनने शो में भी बोला था कि सुन, मैंने हम्म। पलक को ये चीज बोली है। तो हम्म। तुम रियल लाइफ में तो इतना एंटी एंटी जिया करते थे, मुझे बोलते थे अपनी दोस्ती तोड़ दो उससे, और तुम अभी गेम के लिए इतने गुड फ्रेंड्स हो रहे हो। सो ये डेफिनेटली खेल है बरका, ये कोई मेल नहीं है। आई नो कैसे बदलते रिश्ते वो देखने को मिल रहा है बिग बॉस मिलते में। हैं, बिल्कुल Every बिल्कुल week relationships are changing, equations are बिल्कुल। different. So I have last two questions to ask you, पलक। मुझे बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके, और मुझे लग रहा है हमारी ये बातचीत, ये वार्तालाप चलता जाए। और मैं आगे भी उम्मीद करूंगी कि आपसे बातचीत करने का हमें मौका बिल्कुल परसोना को मिलता रहे। बिल्कुल तो बिल्कुल। पलक, तीन कंटेस्टेंट्स बताइए जो आपके हिसाब से बहुत स्ट्रांग हो और बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो। सो डेफिनेटली अभिषेक एंड मनीषा, विदाउट अ डाउट, मुझे सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये दो नाम है। अभिषेक मेरे लिए नंबर वन रहेंगे। मनीषा डेफिनेटली एंटरटेन बहुत कर रही हैं शो में। शी हैज अ लॉट टू गिव ऑन द टेबल, सो हम्म। डेफिनेटली शी डिजर्व्स टू बी इन टॉप थ्री। हम्म। थर्ड नाम, ये मेरी फेवरेट तो नहीं है, हम्म। बट अगर मैं गेम पर्सपेक्टिव देखूं, जो कि बहुत ही चालाकी से या अपना दिमाग यूज करके, दिल नहीं लगा के जो खेल रही हैं, वो है पूजा भट्ट। गेम के लिए वो बिल्कुल सही जा रही हैं, बिकॉज चार लोगों को एक गेम में कंट्रोल करना इज नॉट इजी। नॉट इजी। वो उन्होंने किया है डे वन से। सो दैट आई मेरे को दिल पे पत्थर रख कर ये कहना पड़ रहा है, बट इट्स अ गेम, डेफिनेटली गेम है। तो अगर गेम पर्सपेक्टिव में देखूं तो टॉप थ्री में मैं पूजा भट्ट को देखूं। You may hate her, you may like her, but you यस, cannot ignore her. you cannot ignore her. You It's a cannot. love and hate relationship with her, but I हाँ. cannot ignore her for sure. But I have found there is a lot to learn also from her. जो उनकी बातें I agree. हैं, बहुत पॉजिटिव होती हैं। बहुत I जिस तरह से वो agree. बातें करती बिल्कुल हैं, जिस तरह से वो लैंग्वेज यूज करती हैं, बहुत पॉजिटिव लगती हैं कहीं ना कहीं मुझे। बाकी ये पॉजिटिव डोमिनेट। तो मैं नहीं कहूंगी, मैं हाँ। यहाँ पे आपको अपोज करूंगी थोड़ा। अच्छा। मुझे कहीं ना कहीं भी उनका पॉजिटिव नहीं लगता, बिकॉज जिस तरीके से वो चढ़कर आती हैं आप पे, तो वो जो एक तरीका होता है, आप इस चीज को कन्वे पॉजिटिवली भी कर सकते हो, बट जो उनका कन्वे करने का तरीका है, वो अपने ओपिनियंस दूसरों पे थोपती हैं, जो कि मेरे साथ पर्सनल इंसिडेंस हुआ है, इसीलिए मैं ये कह पा रही हूँ। नहीं तो मेरा उनका बॉन्ड दूसरों से जो भी, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके से वो आई थी मेरे पे भी बोले, you are not wise enough, but Manisha is. You think you're ऐसा। superior. I was zapped. I said I never make anybody like feel inferior, or I would tell myself as superior. हम्म। वही चीज बार बार दोहराना, आप अनग्रेटफुल हो, ये वो। आई एम सॉरी, बट मुझे कहीं भी उनका वो ढंग बात करने का या कन्वे करने का पॉजिटिव नहीं लगता। बट डेफिनेटली मैं एक चीज कहूंगी, जो चीज वो बोलती हैं उनमें बहुत ही विजडम है। वो बहुत ही राइटियस वे में चीजें, कुछ उनकी बहुत चीजें सही होती हैं। बट डेफिनेटली जस्ट बिकॉज शी सीनियर, जस्ट बिकॉज शी सीन लाइफ मोर, जस्ट बिकॉज शी इज पूजा भट्ट, आई एम नॉट गोना से दैट उनने दुनिया ज्यादा देखी है तो वो जो भी बोलती है वो सब सही होता है या हम्म। पॉजिटिव होता है। नो, आई डोंट अग्री टू दैट। आपने कोई काफी मूवी चीजों पे उन्हें देखी? गलत। आपने कोई मूवी देखी पीबी की, बिग बॉस से आने नहीं, के बाद? मुझे देखनी भी नहीं है, थैंक यू सो मच। आई नो हैव बट सीन यू इनफ मस्ट ऑफ हर इन वॉच। द हाउस। आप देखना, दिल है कि मानता नहीं, यू वुड लव दिल है कि द मानता ही नहीं, हाँ केमिस्ट्री। हाँ, जी। यू वुड लव द केमिस्ट्री बिटवीन पूजा भट्ट एंड आमिर खान। एनीवे, आमिर खान या या सो माय लास्ट क्वेश्चन। सी पलक, हालांकि ये मुद्दा थोड़ा सा पुराना हो चुका है, लेकिन अभी भी इसको रेकअप में देख रही हूँ, इस पे बहुत इंटरव्यूज अभी भी आलिया के किए जा रहे हैं। द वे शी वॉज एलिमिनेटेड, और इमीडिएटली एक एपिसोड हुआ था, सैनिटरी पैड का इशू हुआ था, जिसके जी। बाद उनका एलिमिनेशन हो गया था।
उसके बाद बिल्कुल। दिस इशू बिकेम वेरी ह्यूज एंड आई felt very sad and pathetic to Yes. see her giving interviews about the same issue and talking about the same thing. Yeah. According to me, बिग बॉस हाउस में इस इशू को बिग बॉस खुद ही दबा सकते थे, या कई बार गाली गलौज Absolutely. होता है तो उस तरह की चीज को म्यूट कर दिया जाता है, कुछ I भी कर agree with सकते you. थे, लेकिन इसको फ्लेयर अप किया गया। और हमने ये भी देखा कि आकांक्षा एंड जिया, दे वर आल्सो डिस्कसिंग दिस ओपनली Yes. about Alia, Yes. which Absolutely. being a woman, I found it to be very insensitive and not बिल्कुल not in a good spirit. So, what बिल्कुल। is your opinion about it? What do you have to say on this? डेफिनेटली आकांक्षा और जिया मेरे दोस्त हैं। आकांक्षा इज मोर क्लोजर टू मी, Hmm. बट ये चीज मैंने कही भी थी। इनफैक्ट मी एंड माय मॉम वर वाचिंग दिस एपिसोड, मैंने Hmm. मम्मा को भी ये चीज बोली, ये चीज मैंने इन दोनों से एक्सपेक्ट नहीं की थी। Hmm. दे वर क्लोज्ड आउट अबाउट इट। हाँ Hmm. वेदिका, आर यू सीरियस? Yeah. 2 दिन पहले मैंने उन्हें याद दिलाया है, उनका पैड प्रोडक्ट्स पड़े थे बॉडी वॉश के ऊपर, Oh God. रैपर। मैंने उस चीज का बतंगड़ नहीं बनाया, Hmm. मैंने उस चीज को हवा नहीं बनाया। मैं बाहर आई बाथरूम के, मैंने कहा गाइस हु इज चमिंग हियर? शी सेड आई एम। आई सेड देविका योर बैड। शी सेड ओह या सॉरी सॉरी सॉरी। शी इज गॉन एंड टेकन। ये मेरा और उनका मुद्दा हो चुका है। Hmm. तब तो ये बात नहीं उठाई किसी ने भी, या तब तो उनकी ममता पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। वो आलिया थी तो अगेन पूजा भट्ट की बात पे कि माँ, बच्चे होने से आप माँ नहीं बन जाते। Hmm. दैट इज अ ह्यूज स्टेटमेंट टू पास एज अ वुमेन। Hmm. हाउ कैन यू? Hmm. एंड दैट सैनिटरी पैड को भी लेकर आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद जिया एंड आकांक्षा। आकांक्षा ने ये चीज कही थी कि मेरी ड्यूटी में मैं ये नहीं करूंगी, और जिया वाज लाइक डूड नो वे एंड ऑल। मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी कि शायद मैं उस जगह होती तो मैं इस चीज का इतना बड़ा बतंगड़ नहीं बनाती। Hmm. बहुत लोग उस घर में बहुत चीजें भूल जाते हैं। उस टाइम आपने देखा होगा। गीले कपड़े पड़े रहते हैं अंदर बाथरूम में, Oh God. चड्डियां लोगों की पड़ी रहती हैं। मैं क्या ही बोलूं। मनीषा को इतनी बार मैंने याद दिला, अपने गीले कपड़े उठा ले, स्मेल आ रहा है बाथरूम। But it's इट्स so अ difficult हाउस। to share bathroom with so many people, डेफिनेटली isn't it? डेफिनेटली इज, It's डेफिनेटली really इज, बट not. यू हैव टू एडजस्ट। But you have to, true. उस टाइम मैंने देखा था during this discourse between Akanksha and Jiya, fukra.insaan was also sitting on the bed, and he was very wise. He got up from there, he went out. यस यस या एंड आई थिंक वो चीज थी जब ये आप ये बात की बात कर रहे हैं, जब जिया ने कहा था कि मैं इसको लात मार के बेड से नहीं गिरा दूं। इज इट दैट वन व्हाट यू टॉकिंग अबाउट? आई नहीं, डिडंट गेट इट। उस टाइम आलिया के ये पैड को लेकर डिस्कशन हो रहा था अच्छा अच्छा, ओके ओके। आकांक्षा और जिया के ओ, बीच में। पैड वाली बात आप कर रहे उस हैं? ओके टाइम आई ओके रियली ओके। लाइक फुकरा.insaan, he got up, he went out of the ही room. वेंट अवे, राइट 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 राइट, ऑफ कोर्स। एंड फिर भी उन्हें ये कहा जाता है कि वो लड़कियों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मुझे नहीं लगता ये चीज कहाँ से आई है, हम्म। क्यों आई है, हम्म। क्यों उनके लिए इमेज। फॉल्स नरेटिव तो ये होता है मेरे अकॉर्डिंग, जो इतना ये शब्द इस शो में यूज किया गया है। हम्म। सलमान सर ने भी, बिग बॉस ने भी फॉल्स नरेटिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लिए भी ये फॉल्स नरेटिव सेट किया, बट बिकॉज आई पर्सनली फेल्ट ही वाज बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एवरी वुमेन, Yes. एवरीबडी फॉर दैट मैटर। मेरे साथ भी जितना भी उनका बॉन्ड हुआ था बहुत ऑर्गेनिकली हो रहा था, तो आई फेल्ट ही वाज वेरी रिस्पेक्टफुल। He ही वाज looks नेवर more क्लिंगी। mature. He looks more mature than his डेफिनेटली age. definitely he's more mature than Jade, than Avinash, than anybody. So So, Palak, thank you so much for this thank insightful interaction. you. Loved talking to you and look Same forward to here. more such interviews. We will put this in the magazine also, Palak, Oh, and lovely. we will take this interview on the Instagram also and YouTube also. Lovely. YouTube is something we are new at now. So, Okay. I would really request you to share this interview as much as you For can. sure. So Why that not? it gets viral, because during this discourse we spoke about many new things also, New things many as well. other elements and aspects about the Big Yeah. Boss house which people Yeah. don't know. So No, right. it will be lovely if you share this. Definitely. I will definitely share it on my handle for sure. Thank you so much, Palak, and whatever Thank I have you. to do for you, we are always there for you. So sweet. Thank you so much. That really means a lot. I appreciate it. Thank you, Barkha. Take care. Bye Thank you, bye. ma'am. Thank you. Bye.